Okay, dear friends, up to our last lecture, we studied the law of demand. As propounded by Professor Alfred Marshall, the law of demand explained us the inverse relationship between price of the product and quantity demanded. Professor Marshall said that at higher price, less will be demanded, and at lower price, more will be demanded. Further, we also studied exceptions to the law of demand, and now in our lecture today, we would be describing the concept called as individual demand. Now, what exactly is individual demand? Demand for a product by one consumer. Demand of one consumer for one commodity. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो सीए फाउंडेशन का बैच है, इसमें मेरे पास सब मिला के 50 स्टूडेंट्स हैं, मगर उसमें से अगर नेहा मेहता या फिर लेट अस से निक्सन अल्मेडा demands one pen, then his demand for that pen would be called as individual demand. तो ऐसे 50 लोग हैं तो 50 लोग का 50 इंडिविजुअल डिमांड रहेगा, एंड अगर इन पूरे बैच के डिमांड को हम कंबाइन करेंगे, then that would be called as market demand. Are you getting the difference between individual demand and market demand? Demand for one commodity by a single consumer is called individual demand, and demand for one commodity by multiple consumer is called market demand. Now, in individual demand is also subject to law of demand, that is inverse relationship. At price 5, consumer Mr. X demanded 10 apples. 10 was the price, 7 apples. 15 was the price, 5 apples. So this concept shows inverse relationship. मतलब यहाँ पे भी आप देखो price बढ़ गया, we can see demand has reduced, and price reduced हो गया, demand has rised up. We can see that price and demand are going in opposite direction. It explains which relationship. They are going in opposite direction. It explains which relationship. Very good. It is explaining inverse relationship between price of the product and quantity demanded of the product by an individual consumer. Now, we see market demand. Demand of all consumer for one commodity. अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, दैट पेन, निक्सन अल्मेडा का डिमांड फॉर दैट पेन इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. बट पूरे मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं वो उस पेन को जब डिमांड करेंगे तो उनके डिमांड का जब टोटल करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज मार्केट डिमांड. Market demand is nothing else but, I can say, sum total of individual demand. Price quantity demanded of commodity A. Consumer हमने देखे market में, we assumed that there are 3 consumers only, X, Y and Z. तो 10 पे X ने 2 commodity A demand किया, Y ने 2 commodity, Z ने 3 commodity.
So what is the total market demand? 2 plus 2, 4 plus 3, 7. 8, 3, 4, 5. So we can see 12. 6, 4, 6, 9, 19. 4, 7, 9, 11, 27. 2, 10, 12, 15, 37. So you observe, if we observe this table, we can see that over here, what is happening to the price? 10, 8, 6, 4, 2. Price क्या हो रहा है? We can see. See over here. If we see this table from top to bottom, what do we observe? Price क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है. Price is decreasing. And at that part, you can see that price is reducing. And at that price, we can see what is happening to the demand. 7, 12, 19, 27, 37. I was expecting this answer. Very good. इसमें से एक पर्सन को छोड़ के बाकी सब ने आंसर गलत दी. आकांक्षा ने भी करेक्ट आंसर दिया एंड गोपाल जोशी ने करेक्ट आंसर दिया. प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड राइजेस, नॉट इंक्रीज. अगर आप इंक्रीज ये वर्ड बोलोगे देन दैट वर्ड इज रॉन्ग. दैट वर्ड इज रॉन्ग. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Price never increase or decrease. Demand never increase or decrease because of price. Demand rises or falls because of price. वो क्यों ऐसा? That concept we are going to study as the next part of the lecture. आज के lecture में अभी वो shift in demand, variation in demand and change in demand उतना हो जाएगा. Then the chapter is over and we will conclude. तो जब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे, we can see that when price was 10, quantity demanded was 37. Sorry, price was 10, quantity demanded was 7, and price was 2, it was 37. दो पॉइंट मिले, उनको जब हम ज्वाइन करेंगे, we get DD as the demand curve. Make a note that this demand curve DD, we can see that it slopes downward from left to right. Price कम हो गया, we can see demand बढ़ गया. It is sloping downward from left to right, indicating inverse relationship, and that downward sloping curve is also sometimes called as negatively sloping curve.
price rise, demand falls. Price falls, demand rises. Inverse relationship between price and market demand. Any doubt in individual demand and market demand? कोई डाउट है इन दो कंसेप्ट्स में? Okay, now we go to the next concept called as change in demand. देखो डिमांड वी ऑल नो, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड जो है इनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. कौन से दो पार्ट है, कोई बताएगा मुझको? वेरी गुड. प्राइस, और प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स थे दे आर कॉल्ड एज अदर फैक्टर्स, राइट? Price was one part of factor and other factors. So can I say demand can rise or fall due to price, and demand can also rise or fall due to other factors? मतलब प्राइस की वजह से भी डिमांड बढ़ सकता है, कम हो सकता है, एंड अदर फैक्टर्स की वजह से भी डिमांड बढ़ सकता है या कम हो सकता है. दैट इज द करेक्ट पार्ट. So based upon the reaction, based upon the factor which has influenced the demand, change in demand is divided into two parts. एक होता है वेरिएशन इन डिमांड, दूसरा होता है शिफ्ट इन डिमांड. मतलब अगर सिंप्लीफाइड वे पे इफ आई से, अगर प्राइस के वजह से डिमांड बढ़ेगा या डिमांड कम होगा, प्राइस के वजह से डिमांड का बढ़ना या कम होना, is called variation in demand. एंड अदर फैक्टर्स के वजह से डिमांड का बढ़ना या कम होना, अदर फैक्टर्स के वजह से डिमांड का बढ़ना या कम होना इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड. मतलब चेंज इन डिमांड में डिमांड चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड शिफ्ट इन डिमांड में डिमांड चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. अभी मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं, आप मुझको बताओगे कि वो वेरिएशन का पार्ट है क्या शिफ्ट का पार्ट है. ड्यू टू COVID-19 there is a rise in the demand for sanitizers into the market. शिफ्ट का पार्ट है, समझा बराबर? वेरी गुड. ड्यू टू rise in the price of sugar, I brought 2 kgs less rice, 2 kgs less sugar in my house. Very good. Due to rise in the price of petrol, I decided not to buy the car. गलत गलत गलत. It is part of shift.
अदर फैक्टर हो गया ना ये, प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज रिड्यूस्ड द डिमांड फॉर कार, अदर फैक्टर शिफ्ट का पार्ट हो गया ये, समझा सबको? अभी देखो मैंने क्या बताया, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ भी सकता है, डिमांड कम भी हो सकता है, तो दो पार्ट है। अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। प्राइस के वजह से डिमांड बढ़ेगा देन दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। सम पीपल also call it as dash. Extension is also called as dash, expansion of demand. Very good. Extension or expansion. एंड अगर प्राइस के वजह से डिमांड कम हो गया, अगर प्राइस के वजह से डिमांड कम हो गया, इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अदर फैक्टर्स के वजह से भी दो पार्ट होते हैं। अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ गया देन इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, एंड अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड कम हो गया इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड।